Guys, this is the part two of the lecture. We are going to start with the GI problems now. Okay, hopefully you are done with the first part of the lecture. Okay, so in this lecture अपन पूरा lecture complete कर देंगे, summary मिल जाएगा आपको, and the GI system will start now. Okay, so the GI system, it is the most important part of this drug. GI system is the most important part of the drug. We have to memorize anyhow. Exam में यही पढ़ के जाना होगा. If we have less time, we will study this only. Okay, so everything tastes are the eructations. Everything tastes are सब खट्टा खट्टा लगता है. Okay, the eructation मतलब दकार, eructations मतलब belching और दकार. Okay, the heartburn मतलब आज जब एसिडिटी होता है इधर बर्निंग होता है ना, इट इज द heartburn. Okay, and the water brush is basically there is a stage before vomiting ना, stage before vomiting जिसमें पानी पानी आता है ना. there is a stage before vomiting जिसमें दकार आता है, पानी आता है. that is also the water that comes, that is also sour. That is also sour. Okay, and there is sour vomiting also between the chill and the heat stage of fever. This much is done. Okay, the next point. The next point is the gastric affections. Gastric affection मतलब gastric का problem. Excessive accumulation of flatulence मतलब पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है. And there is a constant sensation of satiety. Constant sensation of satiety मतलब पेट फुल लगना, कि थोड़ा सा भी खाया तो पेट इधर तक भर गया, थोड़ा सा खाया बस पेट इधर तक भर गया. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम. ओके, सो गुड एपेटाइट, उसको भूख तो लगती है बट ए फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट. भूख लगती है, थोड़ा सा भी खाता है उसको फीलिंग ऑफ सेटाइटी आता है, मतलब पेट इधर तक भर जाता है. दिस मच इज क्लियर. ओके, ही फील्स ब्लोटेड. ब्लोटिंग जैसा होता है, पेट में गैस बन जाता है. हमने जो केस देखा था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, उसमें भी ही फील्स ब्लोटेड. ओके, एंड फर्मेंटेशन इन द एब्डोमेन, पेट ठीक से हजम नहीं होता है. फर्मेंटेशन तो आई थिंक यू नो. ओके, हजम ठीक से नहीं होता है. द फूड स्टार्ट्स टू फर्मेंट विथ loud grumbling, croaking, especially in the lower abdomen. Grumbling and croaking are sounds. Okay, they are basically sounds. Okay, that comes from the lower abdomen. लोअर एब्डोमेन से साउंड आता है, और दिस आर द गैस्ट्रिक अफेक्शन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइको. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अपन को ये भी याद रखना, अपर एब्डोमेन कार्बोवेज, एंटर एब्डोमेन चाइना. अपर एब्डोमेन में अगर गैस बनता है तो कार्बोवेज, लोअर एब्डोमेन लाइकोपोडियम, द होल एब्डोमेन सिनकोना चाइना. फुलनेस नॉट रिलीव बाय बेल्चिंग, जो पेट का फूलापन है इवन आफ्टर ही डकार मारने के बाद भी पेट फूला का फूला ही रहता है, नॉट रिलीव्ड. ओके, ये सिनकोना में भी दिया गया है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन तो यू नो, कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है. सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट मतलब लास्ट हॉस्पिटल विजिट, लास्ट मेजर प्रॉब्लम, उसको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ होगा जैसे निमोनिया, सिंस लास्ट मेजर प्रॉब्लम हॉस्पिटल विजिट. ओके, निमोनिया, टाइफाइड, उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन है. निमोनिया टाइप का कोई भी डिजीज हो गया. ओके, फ्रॉम व्हेन अवे फ्रॉम द होम, जब घर से कोई अपन जैसे बाहर गए, जब घूमने गए तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लाइको पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. ओके, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों का भी कॉन्स्टिपेशन है. ओके, विथ इनएफेक्चुअल अर्जिंग, इनएफेक्चुअल मीन्स नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब नो प्रॉपर रिजल्ट, मतलब अर्ज तो आता है, अर्ज आता है टॉयलेट जाने का, बट क्लियर नहीं होता. रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्यूड्स during stool developing piles. So due to constipation there is development of piles also. Due to constipation there is development of piles also. Okay, the next point is discharge of blood from the genitals during every stool. This is a characteristic symptom. तो genitals से blood निकलता है जब stool का pressure पड़ता है. Okay, and then the another point, hernia is right sided, has cured many cases especially in children. Okay, hernia is basically loosening up of एब्डोमिनल कंटेंट, लूजनिंग ऑफ, ये अपन ये सर्जरी या एनाटोमी में पढ़ लेंगे, एब्डोमिनल कंटेंट्स. तो ये हार्निया का केसेस को भी ठीक किया है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, राइट साइडेड हार्निया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम, rats send in urine.
on the child's diaper. There is a red sand, very important. I'll show you the picture. This is the red sand in urine. This is the red sand in urine. Red sand in urine. Okay. So red sand in urine, especially in the child's diaper. रेड सैंड इन यूरिन इन चाइल्ड पर अपन ने रेड सैंड इन यूरिन पढ़ लिया, देख लिया, पिक्चर अपन ने देख लिया. ओके, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, पेन इन द बैक, रिलीव बाय यूरिनेटिंग. ओके, सो बच्चा सुसु करने से पहले रोता है एंड देयर इज अ रेड सैंड इन यूरिन, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पेन इन द बैक, रिलीव बाय यूरिनेटिंग. ओके, पेन इन द बैक, रिलीव बाय यूरिनेटिंग. दिस इज बेसिकली जब रीनल कॉलिक होता है ना, रीनल कॉलिक, रीनल स्टोन, तो दिस सिम्टम्स अपन को देखने को मिलता है. राइट साइडेड, हाँ, राइट साइडेड, रिलीव बाय यूरिनेशन. ओके, देयर इज अ रीनल कॉलिक राइट साइडेड. ओके, रीनल कॉलिक राइट साइडेड. सो राइट साइडेड रेमेडी में दिया जा सकता है. एंड देयर इज रेड सैंड इन यूरिन. दिस मच इज डन. Okay, the next part is, the reproductive system. The reproductive system, that is basically importance. That is importancy of the young man from onanism or sexual access. Importance का मतलब अपन को तो पता ही होगा. Okay, you know, I know, everybody knows. Importance is basically sterility. Sterility. Okay, बच्चा ना पैदा करने पाना, inability to perform, not sterility actually, inability to perform the sexual activity, or inability to perform sexual activity. Sexual activity, sexual act of young men. Okay, after 25-30 years of age, from onanism or sexual excess. क्यों हुआ है? Due to masturbation. Onanism means basically masturbation. Due to sexual excess, extremely sexual activity पे involved होना, तो there is basically impotence. Okay, penis is small, okay, cold and relaxed. This much you can understand only. Okay, and old man with strong desire but imperfect erection, मतलब desire is there, sexual desires are there, but erection नहीं हो पाता है. Okay, false sleep during embrace. Okay, premature emission, there is a problem of premature ejaculation also, and during the sexual act he becomes so tired, power की कमी है, so the patient falls into sleep. Okay, so this is the male reproductive system, is a very great drug to be given. Okay, the next part is dryness of the vagina. Okay, vagina का dryness है, burning in, during and after question. Sexual act के during and after there is extreme burning क्योंकि dryness है, there is no lubrication. Okay, and there is physometra also. Physometra is basically sounds, okay, from vagina. Sounds from vagina. Physometer means sounds from the vagina. Okay, the next part is fetus appears to be doing somersaults. Somersaults मतलब ऐसा बच्चा जो है fetus ऐसा घूमता रहता है पेट के अंदर, ऐसा माँ को फील होता है. Okay, this much is done. Okay, the next part is the respiratory system. The respiratory system, pneumonia का part, pneumonia neglected or maltreated base of the right lung involved specially to hasten absorption and expectoration. This point we have already studied in the last part. Okay, okay, cough कैसा होता है? Cough is deep, ऐसा type है, deep, hollow, खाली जैसा, हो type का. Even rising mucus in the large quantities affords a little relief. म्यूकस बहुत सारा आता है बट रिलीफ नहीं मिलता, कफ रिलीफ नहीं मिलता. दिस इज द कफ ऑफ लाइकोपोडियम. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 foot हॉट एंड अदर फुट कोल्ड. एक पैर गर्म है, द अदर पार्ट इज कोल्ड. ओके, this is characteristic symptoms from the symptoms of lycopodium. Okay, now we are going to start with the mortalities. Okay, the aggravation, nearly all diseases from 4 to 8 p.m. 4 to 8 p.m. aggravation, lycopodium very important. 4 to 8 p.m. aggravation, lycopodium is very important. Okay, and emulation कैसे होता है, कम कैसे होता है? Warm food, warm drinks. Okay, from uncovering the head. Okay, from loosening the garments, all these things इससे कम होता है. So relation में आ जाता है अपन complementary to iodine. Okay, iodine. After lyco, we can start with iodine. Bad effects, ailments from onion, bread, wine, liquors, tobacco smoking. These are the bad effects. Tobacco chewing.
Okay, इससे बैड इफेक्ट होता है लाइकोपेशन को. Okay, and then it is rarely advisable to begin the treatment of chronic cases with lycopodium unless clearly indicated. It is better to give first another antiseptic. तो क्या बोला गया है, we should not start the treatment of any chronic disease with lycopodium. Okay, because it is a very deep seated remedy, बहुत deep acting remedy है, इसीलिए अपन को लाइको नहीं देना चाहिए. Okay, and it is a deep seated long acting remedy and should be rarely repeated. मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए. If we give 2-3 dose also, and it will act for a long period of time. So this was the lycopodium. Okay, now I will be telling you about the important parts. Okay, constitution अपन को पढ़ना ही है, और the introductory part, introduction. Okay, इसमें mentals important है. Okay, and then physical also, mental, physical, and the GIT is most important. GIT is most important. Okay, GIT is most important, and if you want, you can study about the female GIT, female reproductive system. Okay, this much I think it is enough. If you for last minute preparation, otherwise this drug, last minute this drug is very important. It might come for 10 marks. Okay, it is a polycrest. Okay, it is a polycrest. It will come for 10 marks. It might come for 10 marks. Okay, this much is done. Okay, just I'll tell you some key points. इसमें लिखा है complaints are worse from 4 to 8 p.m. दिस मच अपन ने पढ़ लिया. और एक्सेसिव हंगर, कैनाइन हंगर, थोड़ा सा खाने से पेट भर जाता है. लिटल फूड ओवरफिल्स, wakes up at night feeling hungry. ओके, नॉइजी फ्लैटुलेंस, लोअर एब्डोमेन में फ्लैटुलेंस होता है. फ्लैटुलेंस बेसिकली मीन्स गैस. लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में क्या था, कार्बोवेज. फुल एब्डोमेन में क्या था, सिंकोना. ओके, लोअर एब्डोमेन में लाइको. Okay, and then red sand in urine, child cries before urinating. Okay, red sand in urine, it is red sand in urine. It is a characteristic symptom, red sand in urine. Okay, so basically this is it. This is the Lycopodium clavatum. This is the drug. Hopefully you understand that this is a very important drug. Study the Helen Skinner properly. This is sufficient, and hopefully you understood the lecture. Okay, bye.